What a stunning win from Peshawar Zalmi. The way they recovered in this match, it was quite epic, and they needed this win. Their bowlers were falling short in the previous games, but the disappointment on the Karachi Kings fans, Wasim bhai, yet again on the losing end of things. Babar Azam, a very proud captain indeed. They've got points in the bag, and they've started off the Pindi leg on a wing note. Hello and welcome to Pitchside once again, and it's always a pleasure to have you all here. Peshawar Zalmi, what a spectacular win for them. Remember the way they started this game? They lost a couple of wickets just in that power play, in that first over. Mohammad Amir was quite brilliant. But the way they came back, from there onwards, there was no stopping them. And when you're talking about their batting, I think there was one standout player in their batting department today, a star in the making, Haseebullah Khan, who also joins us in the studio alongside Sana Mir. Haseebullah, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का. वैसे तो आपसे वहाँ पे बात की थी, बट हमने कहा हम आपको थोड़ा और मज़ीद तंग करते हैं क्योंकि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आज. तो अपने सफ़र की शुरुआत शुरू से शुरू करते हैं. कहाँ से शुरू की क्रिकेट, और थोड़ा सा बताएं, व्यूअर्स को एजुकेट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने परफॉर्म करवाया. बिल्कुल शौक़ था क्रिकेट का मुझे बचपन से. स्कूल टाइम से मुझे शौक़ था. मैंने अपने जो क्लब है उसके लिए मैं 4-5 साल पानी लेकर जाता था, और मैं बहुत खुश होता था कि मैं वो सिर्फ मुझे फील्डिंग कराए वो लोग. तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने. फिर अंडर 16 के ट्रायल्स आए तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ, और बलूचिस्तान से मैंने उधर बहुत अच्छी परफॉर्म की. बलूचिस्तान से हाईएस्ट स्कोरर रहा. तो उसके बाद मैंने सेकंड ईयर भी बलूचिस्तान अंडर 16 खेला, उसमें परफॉर्म किया मैंने, और मैंने पाकिस्तान में सेकंड पे था उस वक्त. तो उसके बाद मुझे चांस मिला अंडर 16 पाकिस्तान खेलने का. फिर मैंने पाकिस्तान अंडर 16 खेला, उधर भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैंने 100 किया था. तो उसके बाद मैं अंडर 19 में भी आया. अंडर 19 में भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. वर्ल्ड कप के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया. तो वर्ल्ड कप में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से हाईएस्ट स्कोरर था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था. उसके 200 की थी आप? जी. तो उसके बाद पाकिस्तान कप में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैंने टॉप किया था पाकिस्तान कप को, और इस साल मैं सेकंड टॉप रन गेटर था और बेस्ट विकेट कीपर भी था. 3 for 2 पे इन्होंने वॉक इन किया. सना, आसान नहीं होता जब आपकी टीम इस सिचुएशन में हो कि ऊपर से विकेटें जो है गिर गई हो. तो आपको इनकी इनिंग्स के बारे में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी या इम्प्रेस की? मुझे पूरी इनिंग्स ही बहुत ज़बरदस्त लगी. सबसे बात तो वही जो आपने बात की है कि 2 रन पे 3 विकेटें गिरने पे जब आप अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली एक एडेड प्रेशर आपके ऊपर होता है, पर प्रेशर बिल्कुल नज़र नहीं आया. ओवरऑल क्रिकेटिंग शॉट्स खेली, टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त थी इनकी शॉट्स की, और बैक फुट हो या फ्रंट फुट, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, मुझे कहीं पर कोई वीकनेस नज़र नहीं आई. और आई थिंक इस एज में इतनी कंसिस्टेंसी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप दोनों तरह के बॉलर्स के ऊपर, चाहे फास्ट हो चाहे स्पिन हो, उनके ऊपर बाउंड्रीज ले सकें. छक्के भी मारे, चौके भी मारे, सिंगल्स भी लिए, और आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त रोल प्ले किया इन्होंने टॉम कैडमोर के साथ. और आई थिंक यही पेशावर को जो जीतने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकी इनिंग्स था. वहाँ से रॉबमन पॉवल को आई थिंक प्लेटफॉर्म इनकी पार्टनरशिप से मिला है, जहाँ से फिर वो एग्जीक्यूशन हुई है. प्रेशर लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं लेते. आई मीन जितनी आपने कामनेस के साथ अप्रोच किया अपनी इनिंग्स को, तो उसके बारे में बताएं. लाइक डू यू एक्चुअली, लाइक यू सीम लाइक अ वेरी काम एंड कूल कैरेक्टर. बिल्कुल यही सोचता कि समी भाई से बात हो रही थी, वो यही कह रहा था कि आप क्लब क्रिकेट में जिस तरह खेलते हैं वहाँ जाके इसी तरह एंजॉय करें. तो मैं गया, मैंने बॉल टू बॉल खेला, और कैडमोर के साथ बात की. उसने कहा अगर आप यहाँ पे 4-5 ओवर खेल लेते हो तो मुझे पता है कि आप छक्के मार सकते हो. उसके बाद तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया पहले जाके, तो उसके बाद रन हो गए. वो नज़र आ रहा था कि डैरन सैमी की जो एक मोटिवेशनल टॉक थी, इट वाज वेरी एविडेंट विद द वे ही प्लेड, व्हिच इज़ व्हाई ही इज़ आल्सो आवर मास्टर ब्लास्टर फॉर टुडे. जब भी कोई नया लड़का आता है और इस तरह आके इस परफॉर्म करता है और इम्पोज करता है, इट्स ऑलवेज हार्टनिंग टू वॉच. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, पावर हिटिंग एबिलिटी भी है, प्रीटी मच प्लेड ऑल अराउंड द ग्राउंड, very strong on the leg side. Brilliant performance. सारे बॉलर्स को आपने आज इतना तंग किया है हसीब, तो ये बताएं कि सबसे अच्छी शॉट आपको कौन सी लगी पर्सनली? Which one did you enjoy? आमिर यामिन को जो सीधा चक्का मारा वो बहुत अच्छा लगा.
सीधा छक्का तो हमेशा ही विजुअली इट्स ऑलवेज सो प्लीजिंग ऑन द आई। अच्छा ये बताए कि बैटिंग आइडल आपका कौन रह चुका हुआ है इन द पास्ट, किसको देख के यू ऑलवेज आइडलाइज कि मैंने ऐसे बैटिंग करनी है? मैं अक्सर सैयद अनवर का बैटिंग देखता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव खेलते थे, तो मैं उनका बैटिंग ज़्यादा देखता हूँ। और वो स्टोरी भी ज़रूर बताएं। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि आप अपना नेट खुद बनाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके बारे में बताएं, वो कैसे आइडिया आया और वो कितना आपके लिए ज़रूरी है और कितना उससे आपको फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो इतने फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मेरे वालिद साहब मुझे ख़ुद बॉलिंग कराता है और मैंने अपना नेट बनाया अपने घर में, तो वहाँ पे हम खेलते हैं, तो वही बॉल स्टिक से बॉल कराता है मुझे। अच्छा ये बताओ कि अब यू स्टार्टेड ऑफ सो वेल, यू सॉर्ट ऑफ अनाउंस्ड योर अराइवल टू एवरीबॉडी, इतनी अच्छी आपने परफॉर्मेंस भी थी, सबने आपको अब नोटिस कर लिया है, तो आगे के आपके करियर गोल्स क्या हैं? लाइक व्हाट्स राइट अप देयर फॉर यू कि मैंने ये चीज़ ज़रूर अचीव करनी है? बिल्कुल, हर प्लेयर का यही ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। मेरा ख्वाब ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, बल्कि रिप्रेजेंट नहीं करूं, ज़्यादा अरसे तक रिप्रेजेंट करूं और मुसलसल पाकिस्तान के लिए अच्छा करूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह की और इनिंग्स भी हमें मिले हसीबुल्ला की तरफ से देखने को, बिकॉज आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, जिस तरह के शॉट्स खेली हैं ओवर एक्स्ट्रा कवर ऑन द लेग साइड, आई मीन it was just nice to see that a batsman is coming through in the HPL PSL, because normally हम बॉलर्स को बहुत बिग अप करते हैं, बट इट्स ऑल्सो नाइस टू सी कि कुछ इस दफ़ा बैटिंग टैलेंट भी नजर आ रहा है HPL PSL में। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रीदर और जब हम वापस आएंगे विल बी जॉइंड बाय अ न्यू गेस्ट टू टॉक अबाउट दिस मैच इन मोर डिटेल। Wonderful performance by Peshawar Zalmi, driven by Haseebullah and Powell. I mean, it's quite the innings with Tom Colacadmore as well chipping in. So the batting is doing well. Peshawar Zalmi bowling के ऊपर काफी discussion हुई थी that perhaps that's in one area where they need to improve. लेकिन आज तो bowlers ने भी अच्छी performance दी, आमिर जमाल की भी wickets थी. Overall, it was a good day for Zalmi and it was a good day for the fans here, because it was rather I would say the one-sided crowd, supporting Peshawar Zalmi. Anyway, it is their home ground as well. But because we're talking about home ground, I've got the local boy here, Baz Khan, who joins us in the studio. Baz, ठंड तो बहुत है, लेकिन आज ठंड प्रोग्राम मुझे लगता है कराची किंग्स की तरफ से आया, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नहीं था। पेशावर ज़ल्मी ने तो they were pretty much heating up things out in the middle, the way they were performing, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से शुरुआत की कराची किंग्स ने, लग रहा था कि शायद आज उनका दिन है। आमिर ने जिस तरह से शुरुआत की, विकेटें ली, फिर उसके बाद क्या हुआ? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमिर ने जब 3 आउट कर दिए तो उसको अगला ओवर नहीं दिया गया, 2 ही ओवर उसने किए। पता नहीं शायद क्या थॉट प्रोसेस थी। इफ़ यू गॉट अ बॉलर जिसने पहले 2 ओवर में 3 आउट कर दिए हैं और उस वक्त अगर उसको आप एक और चले ना भी आउट करे, लेकिन the opportunity for him to bowl another over where the ball is talking for him, तो वो quite interesting था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, जब भी कराची किंग्स आफ्टर जब चेस करते हैं तो ये ज़रूर बात हुई है कि जी बहुत क्लोज मार्जिन से हारे हैं, लेकिन वो मार्जिन्स क्यों हैं, वो जब भी चेस किया वो हार रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से मिडिल ओवर्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं। जो मुल्तान वाला अगर आप मैच देखें, जो बहुत ही एक्साइटिंग मैच हो, उसमें आखिर में इतना ज़्यादा स्कोर था, वो 9 बॉल हो गया, सारा कुछ हो गया, फिर भी नहीं पूरा हुआ। तो यू लिव सो मच फॉर द बैक एंड दैट यू एंड अप लूजिंग। आई थिंक आज जिस तरह का स्टार्ट था, मे बी यू मिस्ड अ ट्रिक विद नॉट बॉलिंग आर्म इन अनदर ओवर। मिडिल ओवर्स में आपने कहा बहुत स्ट्रगल करते हैं, और मिडिल ओवर्स की जो आपने बात की है वही आज हमारा स्टार अटैक है। This validates the point that Baz is trying to make here. Run rate pretty much tells you the story कि कराची किंग्स का between 7 to 15 overs 7.81 रन रेट है, and if you compare it to the other teams तो काफ़ी कम है। लाइक कोयला ग्लैडिएटर्स शायद नीचे है, लेकिन उसके अलावा बाकी टीम्स अगर आप देख लें, कलंदर, ज़ल्मी,
They're all scoring at that around that 9 number. So, like Baz said, you know, कि क्या है? They don't have the right resources. Would you say, Sana, या क्या रीजन है कि वो 7 to 15 में स्ट्रगल कर रहे हैं? आई थिंक आज तो खाली नेट रन रेट के अलावा 5 विकेटें उन्होंने 7 to 15 ओवर्स में 61 रन्स बनाए और 5 विकेटें भी लूज़ किए. आई थिंक इट्स बोथ. एक तो अपनी रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल नहीं करे. मेरे नज़दीक आज शोएब मलिक को नंबर 4 आना चाहिए था. जिस तरह का ऊपर से प्लेटफॉर्म बन गया था उस वक्त इरफान खान न्याजी ने आके, क्योंकि मुजीबुर बॉलिंग कर रहे थे, एक्सपीरियंस आपको चाहिए था उस टाइम पे, तो उस वक्त शोएब मलिक को आ जाना चाहिए था. और फिर ऑब्वियसली आप देख लेते कि इमाद को कब आना है. जो इमाद ने 50 तो कर दी, बट वो मैच विनिंग में कन्वर्ट हो सकती थी कि अगर उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बेहतर होता. तो आप वाली बात सही है कि रिसोर्सेज इतनी अच्छी यूज़ नहीं की इन्होंने. आपको भी यही लग रहा है या आपको लग रहा है कि किसी और को खिलाना चाहिए, या आई मीन व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आई थिंक कासिम अकरम को इन्होंने बहुत जल्दी ड्रॉप कर दिया. एक मैच खिला के ही ड्रॉप कर दिया. इस HPL PSL 8 से पहले यही सुना जा रहा था कि ये HPL PSL will be the coming of Kasim Akram, or with the performance that he's come into before the PSL, उसको मेरे हिसाब से बहुत जल्दी एक प्लेयर को आपने एक ही मैच के बाद ड्रॉप कर दिया. वो ऐसा प्लेयर था जो मिडल ओवर्स में स्पेशली अगेंस्ट स्पिन बहुत अच्छा खेलता है. प्रॉब्लम इनको हो रही है कि इमाद और मलिक का जो बैटिंग स्टाइल है वो काफ़ी सिमिलर है. मलिक ऑल्सो वांट्स टू गेट इनटू हिज इनिंग्स. शुरू में वो ही वांट्स के 4-5 ओवर वो खेले. इमाद भी ऐसा ही है. इमाद यू वांट, मतलब इमाद का ये नहीं होगा कि आएगा और आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स नज़र आएगी. वो या चौका है या सिंगल है, तो वहाँ पे स्टैगनेट कर जाती है बात. सो इवन इफ़ यू पोस्ट इमाद अप द ऑर्डर, तो वो जो मिडल ऑर्डर्स का प्रॉब्लम है वो रिमेन करता ही है. तो बीच में एक प्लेयर ऐसा चाहिए. आई थिंक कासिम अकरम हो सकता था वो प्लेयर जो कि ये सॉल्व कर सके. इस वक्त अभी तक उन्होंने वो सॉल्व नहीं किया. हाँ, वो नज़र आ रहा है उनकी तरफ से कि एक ऐसा इशू है जो कि अभी तक वाकई सॉल्व नहीं हुआ है. बिकॉज इफ़ यू लुक एट पेशावर ज़ल्मी, तो देव बीन क्वाइट इनकरेजिंग टुवर्ड्स ऑल देयर यंगस्टर्स. यू नो, चाहे यू नो मोहम्मद हारिस हो गए या साइम अयूब हो गए, you've got all the options. Haseebullah ho gaye. So they've been backing the youngsters, and perhaps that is the one thing that's been lacking from Karachi Kings. All right, that was the star attack for you. Yeah, we're talking about performances today, so there's no doubt कि Haseebullah के अलावा, if there was any standout performance in today's game, it was by Rovman Powell, which is why he's also a player of the match today. रोवमन पावर बहुत ही पावरफुल प्लेयर है. इतने ये डेंजरस प्लेयर्स हैं फॉर T20 बिकॉज एट एनी टाइम दे कैन hit a big hit or get a boundary. Or today he was on song, he was hitting the ball really well, and once he has that sort of power, it takes the game away from him. Yeah, we're talking about his power, Sana. I mean, उनके जो बल्ले की आवाज़ थी वो कमेंट्री बॉक्स तक आ रही थी जब when he was playing. एब्सोल्युटली. और जिस तरह की उनकी हैंड स्पीड भी थी, और मेरे ख्याल से आज कदमों का इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त किया, वो नज़र आया. क्योंकि जनरली उनको ज़्यादा पसंद करते हैं पेस को अपने लिए, बट आज स्पिन को भी बहुत अच्छा खेला क्योंकि दोनों एंड से स्पिन ऑपरेट कर रही थी. और आई थिंक यही आपकी एज अ T20 प्लेयर कितने आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं. और इम्पैक्ट 34 बॉल्स में 64 रन, ये आपका प्रॉपर इम्पैक्ट प्लेयर है जो आपको किसी भी टीम को एक मिडिल ऑर्डर में चाहिए होता है. और जैसे बाजिद भाई ने बात की, जो पावर नज़र आई है, मतलब वही शॉट्स विद इन अ सेकंड वो बाउंड्री के पार हो जाती हैं. तो एज ए बॉलर आपके पास बहुत कम होता है मार्जिन. कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप पिंडी स्टेडियम की तो तारीफ करें. वो कह रही आवाज़ यहाँ तक आती है, माहौल ही इतना अच्छा बनता है. आपने देखा आज कैसा लगा कि HBL PSL वाकई शुरू हुआ है. यहाँ तक आवाज़ आ रही, हर जगह आवाज़ आ रही, सारा क्राउड इन्वॉल्व. इसकी तारीफ नहीं कर रही. बिल्कुल, इसीलिए तो इतने मैचेस PSL जो HBL PSL है वो पिंडी लेके आया है. अब आप भी तो इस बात की तारीफ नहीं. वैसे पिंडी ने आज I've got to say that पिंडी ने सबको बहुत खुश किया, सबका दिल खुश किया, because the kind of crowds that we had, you know, you've got to laud the people of Pindi for coming out in huge numbers. It was just the first match in Pindi और इतना अच्छा crowd है. अच्छा जी, we're talking about switched on moments of the day, and आज का switched on moment belongs to Tom Caller Cadmore.
Tom Kohler Cadmer. आमतौर पे he's the player who will take the game on, but he took a back seat because of the situation of the game. It was a very important innings, and in the end, match-winning one. Yeah, it's like सिर्फ ये innings नहीं थी switched on moment वाली, like not just this innings. Like if you look at his throughout the HBL PSL, he's been contributing really well for Peshawar Zalmi Baz. लेकिन आज थोड़ा गेयर उसका नीचे था, एज इन ही न्यू कि मेरे साथ जो प्लेयर्स हैं दे आर टाइमिंग द बॉल वेरी वेल एंड ही टुक अ बैक सीट. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट ऑल दैट इज हम अक्सर बात करते हैं स्ट्राइक रेट्स की. आज वो वाली TKC की स्ट्राइक रेट नहीं थी जो हम विच वी आर यूज्ड टू. लेकिन ओवरऑल अगर आप गेम की पर्सपेक्टिव की तरह देखें तो his partnership with Haseebullah, very important. Then his partnership with Powell, very important. Then even his partnership with Amir Jamal, again, वो backseat ले रहा था to make sure that they utilize all 20 overs. What did you like about his innings, Sana? I think वही जो बात बाजिद भाई कर रहे हैं कि जो ओवरऑल जो एक कंपोजर था उनका, क्योंकि ऑब्वियसली पावर जनरेट कर सकते हैं, बड़ी शॉट्स मार सकते हैं, पर क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी थी 2 रन पे, तो किसी एक को डीप जाना था. और बिकॉज ये डीप जा रहे थे, स्टेबिलिटी एक एंड पे दे रहे थे, तो दूसरे एंड पे आने वाला जो था वो एग्रेसिव बैटिंग कर सक रहा था. और तीनों जो पार्टनरशिप्स हुई हैं वो इसी वजह से ही थी कि एक एंड सबको पता था. और इनकी जो ओवरऑल टेक्निक है वो भी ऐसी है कि उस टेक्निक की वजह से ये हर तरह के गेयर में खेल सकते हैं. रॉबमन पावल को अगर आप ऐसे खेलने को कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए. तो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म तीनों प्लेयर्स को मिल सका. Yeah, he can play in all different gears. That's the one thing that's been the standout for his innings. Thank you so much, Sana, for joining us. हम अब आपको जो है मोस्ट वेलकम घर जाने देंगे, लेकिन हम निक नाइट को घर जाने नहीं देंगे because he's always doing our late night show and very happy to be doing it as well. So we'll join him on the other side. Karachi Kings still searching for those points. Peshawar Zalmi with points in the bag. Karachi Kings will look back at today's game and think, where did we lose this one? Considering the way they started, I think it's going to be one of those cases where they're going to sit back and really reflect on where they lost their game because they started off so well today. Now I've been joined by Nick Knight. Nick, I can pretty much ask you the same question. I mean, you know, you've got a team down just in the first over. You've got Mohammad Amir setting up the game for you, and then you allow them to make 198. Yeah, I might change the words a little bit there. Allow, I mean, that was pretty impressive from Haseebullah and the way Rodman Powell finished it off, and Tom Kohler Cadmore, the way he kind of showed maturity. I thought that partnership in the middle there was outstanding. You're right. I mean, it was a terrific start. You know, when you get a side in that sort of problem, you've got 3 top players, two young guys and Baba. When things are not going so well for you, you're looking at character and fight of a team. I thought this was a really big game, actually, for both sides. And to see a side sort of convert what was a really terrible, awful position into a position of strength says a lot about the character of that side. So I think sometimes you've got to give a lot of credit to the way they found their way out of that situation. And you've got to give credit to them for the way they bowled as well to get Karachi Kings out cheaply. I mean, they never really looked like they were in the race to be getting that because they were giving wickets away on consistent intervals. On that note, let's have a look at the fall of wickets of Karachi Kings. Yeah, it all started with a short ball. They were into the pitch and they worked out the fast bowlers especially to be erring that on that sort of length. The slower bouncer did for Tayyib Tahir, and Azmatullah was quite impressive in the length that he bowled. Then Mujibur Rahman comes back in the attack. That's a good catch, Powell racing away. Then that short ball, that is quick. Amir Jamal has a deceptively quick bouncer, and at that stage it was all falling apart for Karachi Kings. They just went on and on losing wickets, and you look at the wickets that they lost, most of them were balls into the pitch, but they bowled really well, and after that start to be coming back and then being able to win the game.
a side that has struggled with their bowling lineup. When you talk about Peshawar Zalmi, they were pretty good today. Zalmi? Yeah. Absolutely. I mean, you know, Jamal, I thought he looked really impressive. I thought, I just felt it was a really, really important game for them to get their sort of somewhere near their A+ game. And I think when you've got 197 runs on the board, then yeah, fair. And it's a little bit more straightforward for the bowlers because you've got that sort of cushion, that buffer, if you like, that if things don't go well and one of your bowlers gets targeted, it's not the end of the world. I think they look a pretty strong side actually moving forward. And when you're looking at the table as it stands at the moment, I'll be very surprised if they don't get through in that top 4. That's why I think this was such a big game, because you look at the impact it's had on Karachi and where they are now and the game, the extra they've played. I'm full of praise for Zalmi tonight. And I think also the change that they made today, Azmatullah, he bowled really well. Amir Jamal, everybody else also chipping in. But because we're talking about fast bowlers, let's have a look at the fastest delivery of the day. Yeah, well, I mean, often the fuller ball is the quicker ball, but there's some good quick bowling on this surface, and that's it. It's a little bit unforgiving as well for some of these bowlers, so you have to be absolutely spot on with your lengths. Was length going to be crucial in these conditions? You spoke about that. We saw that from Peshawar Zalmi as well, the kind of lengths that they were bowling in these conditions. Yeah, I think they sussed it out really well. I thought Azmatullah bowled really well with that short ball, used that. Amir Jamal is always going to bowl short because he reckons that his wicket ball is the bouncer, and he's got a deceptively quick bouncer. So him coming into the side, he will venture full, but more or less his go-to delivery is the bouncer, so he'll bowl short, and that worked. I think they would have looked at the first innings where the runs were scored. If it's not swinging, you don't want to go full, and if you want to go short, then you have to go really short. It is such a good wicket. If it's that in-between length, then we saw Robin Powell just destroy it. I don't think there's anything in this pitch for length. You go back to where we've just come from in Karachi, and it was sort of dry, dusty. Bowlers can bowl it what we call into the surface, and it can sort of do its magic for you in the sense that it can sort of deceive batters at the other end. I don't think we're going to see that, certainly not at this stage, and that looks like a belter to me. Short boundaries, so it's pretty unforgiving, as I say, for the bowlers. I think you've either got to go short, as we saw, or get the Yorkers in. And I mean, Rodman Powell, if you bowl length, it's fine. I think it's fine to bowl length when you're bowling to a new batter, that's absolutely fine. But once the partnership's developed, I think you've got to go short or full. That's quite a great point. With the slow ones over here, if you bowl slow and length, it sort of stands up to be hit. In Karachi, it would grip and maybe turn, or maybe more difficult. So it's going to put the bowlers under a lot more pressure if the wickets stay like this. And it's a tough job for the bowlers out here in Pindi. Lots of runs in these wickets if they continue to be staying that way. But we saw some good catches being taken. They've definitely had a look at Nick Knight's school of catching, I believe. Let's have a look at the catches today. Tayyatire is a really good fielder. He settled underneath that, took it comfortably. But even when he's fielding inside the circle, he's very good and capable everywhere around the field. This went flat, this went really quickly to the fence. This one I thought was brilliant because he raced across. He's very quick, deceptively quick around the outfield, and he's raced across and been able to pluck that and take it easily. Are you impressed with the catching that you've seen at display today? Have they been following your videos a lot? I'm not sure that they're following my videos, but I think the first catch actually I thought was quite a good example of that. Where I think the point I made in the video was do the leg work as much as you can, so you're nice and still when the ball comes down. Now the Rodman Powell, you can't do that because the ball's going away from you. You have to just get the hands in the right place. But when it's possible, do the leg work and get still and get set, then you're probably going to catch a lot more than you drop. This is not easy though. I think we've all played enough cricket to know that when the ball goes up there,
that white ball, it is sometimes difficult to judge exactly where it's going to end up. So sometimes it's easy in these little demos, not so easy out. Yeah, these floodlights are, they've got this glare. They've got this glare when you look at them, so it's never easy. But yeah, a pretty good catching that we saw at display today. And Peshawar Zalmi is going to be the happier camp. Overall, clinical performance by them. And we'll take a short breather and we'll be back just in a bit. One thing about Rahul Pindi that's never going to disappoint you is the crowd. I mean, it was absolutely magnificent considering it was just the first day in the HPL PSL. It was pretty much a packed house and they were all, majority of them, well, were supporting Peshawar Zalmi. It's time to hear their thoughts now. मैं कराची किंग को सपोर्ट कर रहा था और असल में मैं रहते ही कराची हूँ। इधर मैं अपने रिश्तेदारों के घर आया था तो मैच देखने आ गया मैं। पावल ने तो आज बहुत अच्छी बैटिंग की, काफ़ी तमाशाई को एंजॉय करवाया, जिसने इस तरह शॉट्स लगाए, तो इसी की वजह से पेशावर के जो रन्स भी अच्छे हुए हैं, जिसकी वजह से पेशावर ने आज मैच भी जीत लिया। पहली चीज़ तो ये है कि आमिर को पहले ना ये थोड़ा सा बहुत देर से बॉलिंग दे रहा था इमाद, तो आज मेरे हाथ से उसने स्टार्ट में ही पहला ओवर दिया, तो उस वजह से शायद उसने 3 आउट कर गया। ऑनेस्टली स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्टेशन ड्यू टू प्रेशर कुछ ऐसे नहीं लग रहा था कि परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन हसीब जो एमर्जिंग प्लेयर हैं उनने जैसे गेम खेला है तो ऑलमोस्ट सारा प्रेशर उसने गेम से हटा दिया है। फिर ऑब्वियसली पाउल जिस तरह आपको पता है वो हिटर हैं, उसने सारे गेम को वही हम कह सकते विनर है हमारे गेम का। शोएब मलिक से बैड लक हुई है, जैसे आप देख सकते हैं, उस बैट स्लिप कर गए, वो विकेट नहीं स्कोर नहीं कर सके, तो अब कुछ उनकी बैड लक ज़्यादा चाह रही है। अगर पावल ने जिस तरह से आज शॉटें मारी, जिस तरह स्पीड से उन्होंने शॉट खेली, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं पावल के शायद गेंद को ना पकड़ सका, मैं छोड़ देता चौके के लिए। Was it really bad luck for Shoaib Malik, Bazin? I mean, the fans were saying, you know, this is just pure bad luck for Shoaib Malik. His bat was flying in the air, no fault of his own or anybody else's. He was a complete fan of Shoaib Malik, so it was bad luck. It was bad. The ball came too quickly for him. It sort of hit the bat too hard. When you're a fan, everything is excused. I mean, that's what true fans are all about. You know, they've always got an answer, which is why it's today this features in our Masaledar moments of the day as well. Yeah, he's always got that really quick short one. That wasn't a bouncer, but still quite quick. Malik looks at his hands and gloves and the bat following away, but it was the pace that did him. Yeah, it's almost like it caught him by surprise. You know, when you talk about Shoaib Malik, I mean, it's different when you're facing spinners and it's different when you're facing somebody who's got a decent bouncer. It's always a worry when the bat goes further than the ball. I think that probably just about happened there. He's not in the flush of youth. I mean, you know, sometimes the eyes don't pick these things up as perhaps you used to when you were years and years younger. I thought it was really intelligent bowling. I was actually on commentary at the time and I was going, you know, I wonder if he's going to knock it around, get one and try and get I think Matthew Wade was on strike, try and get him on strike. In the end, it was just a ball that he fancied taking on. It was a short ball, it was aggressive mindset. I thought it was terrific bowling. All right, thank you so much, gentlemen. It's time to head home for all of us. But before that, I think let's have a sneak peek at the points table because this is what matters in the end. Remember, Karachi is struggling. They've lost 5 of the 7 games that they've played. And I think it's just a disappointing performance so far from them. They'll be looking to get some back-to-back wins to have any chance whatsoever. Peshawar Zalmi is now up on 6 points and they're leveled with Islamabad United. But Islamabad United just ahead on that net run rate. All right, we move to Lahore tomorrow where the match will start at 7 p.m. from Gaddafi Stadium, Lahore. And it's the home side in action, Lahore Qalandars.
who are leading the charts, and they are up against Koira Gladiators at the bottom of the table. Fantastic crowd, fantastic venue, fantastic city. Everything was great about today. I hope you guys enjoyed today's coverage as well. A huge congratulations to Peshawar Zalmi. We'll be seeing you guys tomorrow once again with all the HPL PSL action, but leaving you with some super moments. He's appealed 3 times and Michael Goff agrees. Pick up! It's a third wicket already! There he goes. Chaka! That's disappeared. Put a bow on it and a post stamp. Short and gone for 6. The swivel. Collar Cadmore. Sets himself and takes the catch. Picked up. What a delightful noise that has made. Straight to the bowler. Jamal. Matthew Wade is fancying that big shot and he pays the price. Gone first conquer.